Good morning, CIMAGE. My name is Vijay Kumar. I am from BCA second sem, and today I am here to deliver the PPT presentation on the topic if-else statement in C language. So the if-else statement in C used to execute a block of code based on a specific condition. If-else statement is a decision-making statement that is used to decide whether the part of the code will be executed or not on the specified condition, test expression. So if the given condition is true, then the code inside the if block is executed. Otherwise, the code inside the else block is executed. So here some points on how the if statement works. The first point is the if statement evaluates the test expression inside the parenthesis, and the second point is if the test expression is evaluated to true, a statement inside the body of if are executed. And the third one is the if the test expression is evaluated to false, a statement inside the body of if are not executed. So यहाँ पे हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया है if स्टेटमेंट को समझने के लिए. So यहाँ पे देख सकते हैं हमने int नाम का वेरिएबल बनाया है, टेस्ट नाम से वेरिएबल बनाया है जिसमें हम लोगों ने 5 इनपुट लिया है और if स्टेटमेंट दिया है जिसमें हम लोगों ने कंडीशन दिया है टेस्ट इज स्मॉलर देन 10, जो कि ट्रू कर रहा है, जो कि 5 है, 10 से छोटा है. तो यहाँ पे हम लोग इफ स्टेटमेंट के अंदर जाएंगे तो जो यहाँ पे हम लोग कंडीशन डालेंगे वो प्रिंट होगा. और अगर यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे है सेम है, हमने 5 लिया है टेस्ट वेरिएबल में. और यहाँ पे देख सकते हैं इफ टेस्ट इज ग्रेटर देन 10. सो यहाँ पे है नहीं, टेस्ट इज स्मॉलर देन 10 है. सो यहाँ पे इफ हम लोग इस स्टेटमेंट से बाहर आ जाएंगे डायरेक्ट, और ये जो एक्सप्रेशन है ये फॉल्स हो जाएगा और ये एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगा. सो हियर यू कैन सी वी हैव टेकन अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे. सो लेट्स इट्स रन इन डेप C++. So here you can see we have taken if statement and the condition is 5 is less than 10. So if the 5 is less than 10, then if the print statement of if statement is print 5 is less than 10. Otherwise the else statement is printed, so 5 is greater than 10. So now we have to compile and run this program to check the program is correct is not or not. So here you can see the result is 5 is less than 10.